Keep the heading. Moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism. In this May, first we will study completely about magnetism. Then only we'll study about moving charges. So first, पूरा we have to do the magnetism only. उनका basic क्या concepts है magnetism में, everything we will see. Okay. So to understand magnetism, the magnetic field will be coming in from where? Tell me. From where magnetic field will be coming? From a bar magnet, right? Till now we know only till bar magnet से magnetic field आएगा बोल के. Okay. So first one we have to study about Oersted experiment. We studied in 10th class also this Oersted experiment. So what is the Oersted observation? A magnetic compass shows deflection when placed near the current carrying wire. So when I place a current carrying wire, okay, he observed that there is a deflection coming in the compass. Compass mein when they will show deflection, tell me. When the deflection will be happen, compass mein? When there is a magnetic field. Okay. So when there is a magnetic field, there is a, a deflection will happen. That means he concluded that current carrying wire produces magnetic field around it. Okay, कोई भी current wire ले लो. Like if you have a compass near any current carrying wire, TV के बाजू में also if you keep, light deflection will be there coming out. That means it is generating a magnetic field. Okay. So then they understood that, okay, not only bar magnet generates a magnetic field, a current carrying wire will also generate a magnetic field. This is only big chapter. बड़ा chapter हो जाएगा अभी. Then magnetism matter वगैरह जल्दी जल्दी हो जाएगा. Okay. Copied. So now, okay. So this is only observation only. Observation that magnetic field is there. But you tell me, as we go away from the wire, magnetic field will increase or decrease as we go away from the wire? Magnetic field decreases. Okay. Then they started working on it. How much magnetic field is there here? How much magnetic field is there here? Like that they want to find. उसके लिए one law came that is called Biot-Savarts law. Very famous law. Okay. So Biot-Savarts law क्या बोल रहे हैं? See, he found only magnetic field due to a current element only, not complete current carrying wire. Only a small current element के वजह से only magnetic field they found. कैसा है? How they find? We will see. Okay. So what is saying? Suppose there is a current carrying wire. Okay. I took a small length dl, small length dl vector. The dl should be in the direction of current always. The dl vector should be in the direction of current. So here, what is the meaning of current element means I into dl को we call as current element. मतलब उसमें करंट कितना जा रहा है into the current element dl, small length वाला current element only we should taking. उसके वजह से r distance दूर में theta angle में I want to find the magnetic field, small magnetic field at this point P by using this Biot-Savarts law. So Biot-Savarts law क्या बोल रहे हैं? Because of any current element, not complete wire. Complete wire का पता नहीं है. Only small current element dl I into dl का वजह से there is a small magnetic field at this point P, right? That magnetic field can be found by using Biot-Savarts law. And he has given the formula also how to find this one. So dB, first we'll write in vector form. Vector form. dB is equal to, formula याद है? Formula. First formula, right? IDL sin theta by R.
Vector form. square Vector form. by I dl sin theta r vector by r cube magnified No, थोड़ा wrong है. So constant भूल जा रहे हैं. Mu naught by into 4 mu pi. naught by 4. Mu naught by 4 pi into I into dl cross r by r cube. This is a formula in vector form. dl cross r by r cube is a formula. Okay. And yeah, आपको you have to understand that the resultant magnetic field, it is depending on cross product, right? That means dB is perpendicular to dl. The resultant magnetic field will be perpendicular to dl, and this dB small magnetic field is also perpendicular to r also, right? This is always true, right? We know that this one c vector is equal to a cross b. मतलब c vector is perpendicular to a and c vector is also perpendicular to b. Okay, but आपको vector form only rare case में will use vector में दिया तो. Okay, but we'll write in scalar form. What is a cross b formula? Mod a mod b, follow, Sin theta. sin theta. Here theta is angle between dl vector and r vector. दोनों का angle between them, theta. Okay, so we are writing in scalar form. dB magnitude we are writing is equal to mu naught by 4 pi into I dl into r sin angle between them is theta by r cube. So r एक कट करूंगा, r square होगा. So dB vector is equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square. Here mu naught is called as what? Permeability of free space. Permeability of free space. A constant value है. So always mu naught by 4 pi value is 10 power of minus 7 always. आपको न्यूमेरिकल्स करने समय mu naught by 4 pi value you should put as 10 power of minus 7. इसका यूनिट्स टेस्ला मीटर पर एम्पियर. टेस्ला मीटर पर एम्पियर. सो ये वाला आपको बाय करना पड़ेगा. mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. So Biot-Savart's law is not calculating total current carrying work वजह से नहीं फाइंड कर रहे. Only the small current element के वजह से only we are trying to find magnetic field. A law है, there is no derivation. Law is, it is how they tell, magnetic field is proportional to current. More the current, more the magnetic field. Magnetic field is inversely proportional to square of the distance. More the distance, lesser the magnetic field. Like that they will combine and the resulting proportionality remove किया तो will get a constant mu naught by 4 pi. So formula बोलो बैठ करो पहला. अभी से लर्न करो श्रीराम. टू डू हार्ड वर्क. अभी जेई मेन से आने के लिए कंपल्सरी थोड़ा कोशिश तो करो. कोशिश नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. अभी से मैथमेटिक्स डोंट मिस एनी क्लासेस. ट्राई टू राइट नोट्स नीटली प्रॉपर्ली एंड इन्वॉल्व इन द क्लास. ओके, हाँ हो गया. फॉर्मूला बोलो श्रीराम बोलो. dB इज इक्वल टू mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square. बोलो mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square. सात्विक बोल सकते हैं. dB is equal to, so dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. okay, mu naught by 4 pi value is how much? 10 power minus 7. That one we have to use for the numericals के लिए, right? Now इसका डायरेक्शन देखेंगे. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन कैसा आएगा? I told right, इधर is a current carrying wire, is a dl element. इसके वजह से करंट एलिमेंट की वजह से थीटा एंगल में r डिस्टेंस दूर में I want to find the resultant magnetic field at this point P. Direction I want, because B is nothing but magnetic field, right? Magnetic field का डायरेक्शन कैसे है, मतलब कैसे आएगा बोल तो we have two methods. One is
राइट हैंड थंब रूल, ये फेमस मेथड है, ये यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। 10th क्लास में आ गया ना, राइट हैंड लेने का, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड बोलते हैं। ओके, सो राइट हैंड क्या है, वी शुड पुट द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, वो फिक्स कर दो, करंट किस तरफ ऊपर जा रहा है ना, थंब फिक्स कर दो, एंड कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, thumb indicate direction of current, curled fingers indicate direction of magnetic field, inwards or outwards, inwards, inwards को अभी से we represent as cross, inwards को cross से represent करने वाला। suppose q point is here, tell me magnetic field किस तरफ रहेगा, right hand apply करो, thumb fix करो in the direction of current and curl the fingers उस point से coming outside, right? So magnetic field is outwards, outwards को we represent as dot, अब इसे डॉट बोले तो आउटसाइड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस है तो इनवर्स है। ये वाला राइट हैंड थंब रूल, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उस पॉइंट में चेक करने का, इनवर्ड सा आउटवर्ड सा, या तो थोड़ा रोटेट करके घूम के चेक करने का। सेकंड मेथड क्या है, वी कैन गो स्क्रू रूल, वेक्टर्स में भी स्टडीड रहे, वेक्टर्स में स्क्रू रूल बोलते हैं। सो आपको क्या करने का, सिंपली डीएल किसका डीएल एंड आर का, डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर का स्क्रू इधर रखो, एंड वी हैव टू रोटेट फ्रॉम डीएल से आर, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर को घुमा रहे ऐसा, जूम जूम जूम। सो क्या होगा, इट इज गोइंग इनवर्ड्स, दैट्स व्हाई इनवर्ड्स स्क्रू। अगर उस डायरेक्शन में रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो स्क्रू को आउटवर्ड्स आ रहेगा। ओके, अंडरस्टूड? सो स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट तो इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड्स। So rather than this one, we will use this one. This is easy. Right hand तो हमेशा रहेगा ना हमारे साथ। So thumb indicate direction of current, curled fingers indicate direction of magnetic field. खत्म। Some more scenario we will see how to find the magnetic field का। Okay, copied? DL cross R, screw rule use करो, and right hand thumb rule. Okay. Okay, determine the direction of magnetic field at point P and Q in the following cases. Okay, चलो इसमें बोलो P में क्या है and Q में क्या है, current is coming like this। फिर हम बोलो राइट हैंड फर्स्ट थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब फिक्स कर दो, खत्म, ये हिलने का नहीं है, कीला मारो, टिक 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 टिक, वी शुड नॉट मूव अगेन। यू मूव दिस वन, पॉइंट पी में चेक करो, इट्स कमिंग आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, राइट? एंड क्यू में सपोज इफ यू सी दिस वन, थोड़ा ये हवा में लेके आओ, दिस इज करंट कैरिंग करंट, राइट? सो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, क्यू तो नीचे है ना, एंड कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इनवर्ड्स। सो हियर इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, हियर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, समझ आ रहा है? सो राइट हैंड को थंब का डायरेक्शन में थंब फिक्स कर लो एंड देन चेक विच पॉइंट में इज कमिंग इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। ओके, ट्राई। पी में क्या है, क्यू में क्या है? P it's outwards and Yes. Q is inwards. यस, देखो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसमें देखो, इसमें इट इज गोइंग इनवर्ड्स, सो इनवर्ड्स एंड दिस इज आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट? नेक्स्ट, तो मेरे को नाउ करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स, करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स, मतलब करंट इज आपकी तरफ आ रहा है। नाउ मुझे पॉइंट पी में पॉइंट क्यू में किस डायरेक्शन आएगा वो टेल मी। करंट ऐसा आ रहा है, ऐसा, इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, करंट जूम बोल के जा रहा है। So for Q, it's going towards the left side, लेफ्ट साइड, ओके, गुड। and for नेक्स्ट, P, it's going on the right side. राइट साइड, बट रॉन्ग। ओके, तो देखो कैसा आएगा, एवरीबॉडी ट्राई करेगा। करंट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस वन, देखो थंब इंडिकेट डायरेक्शन, हाँ बोलो। Q is towards and P is the inside. इनवर्ड सा आउटवर्ड सा, Inwards is P, outwards is Q. ओके, बट रॉन्ग। ओके, देखेंगे क्या है।
करंट इज फ्लोइंग इन द आउटसाइड कमिंग, राइट, ऐसा. ओके, तो मैं तम लगा रहा हूँ, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट. नो पी को ऐसे लगा रहा हूँ ना, इज नॉट गोइंग इनवर्ड्स, इज नॉट गोइंग आउटवर्ड्स, ये ऊपर जा रहा है, राइट, ऐसे ऐसे जा रहा है. इट कैन बी लाइक दिस और लाइक दिस, राइट, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. ओके, now here also, then कैसा, टेल मी, इस पॉइंट में मुझे बोलो, इस पॉइंट पी में यू टेल मी इट इज लाइक दिस मींस, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट. ये तो समझ में आया, फर्स्ट डायरेक्शन कैसे बोल के, see current indicates the thumb indicates the direction of current and curled fingers indicate the direction of magnetic field. मतलब it is coming upwards but cross a straight up, you have to know, not always inwards outwards, upwards downwards भी रहेगा. ओके, so ऐसे है ना, ऐसे लगा रहा है. ओके, I told you dB, the magnetic field is always perpendicular to dl and the magnetic field is always perpendicular to distance, right, I told you vector form में. So dB should be perpendicular, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को आर बोलते हैं ना, इससे परपेंडिकुलर रहने का ऑलवेज, इवन दो योर हैंड इज शोइंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक, ऐसा नहीं है, ऐसे जा रहा है इनडायरेक्टली. dB शुड बी परपेंडिकुलर. सिमिलरली इसका बोलो, दिस आर डिस्टेंस. ओके, सो मैं करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड्स, तब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ए डाउनवर्ड्स है, राइट, एंड डाउनवर्ड्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जाएगा, सर डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं. So this is downwards, ये upwards बोल के बोलने का, not inwards outwards. So this is upwards and this is downwards. So आपको hand कितना अच्छा घुमाए तो, कितना अच्छा योगा किया तो अच्छा रहेगा. Okay, चला. Now try. Now current is going inwards. ऐसे जा रहा है, zoom बोल के जा रहा है. Thumb indicate direction of current and P को downwards and Q का upwards, right? ऐसा ऐसा लगा तो समझ रहा है. ये है ना, P को डाउनवर्ड्स एंड Q का ऐसा घुमाए तो ऊपर. ओके, सो इट इज अपवर्ड्स एंड दिस इज डाउनवर्ड्स, बिकॉज R should be perpendicular, right? That's why magnetic field exactly we are putting 90 degrees. Okay, clear, understood? चलो, now units of magnetic field intensity. B का units I want. Tell me, magnetic field का units is famous one, टेस्ला. टेस्ला, टेस्ला को आगे आपको समझ में आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा, फ्लक्स फ्लक्स में आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला, टेस्ला इज फेमस वन. ओके, सो वी लर्न टिल नाउ एक ही फॉर्मूला है, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से r डिस्टेंस दूर में वी फाउंड द मैग्नेटिक फील्ड. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर. ओके, चलो. हाँ, देखो एक कंडक्टर है, करंट एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट एलिमेंट, राइट, dl इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज करंट एलिमेंट. मुझे सेंटर से r डिस्टेंस दूर में इस पॉइंट में आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. ट्राई करो बाय यूजिंग बायोट सवर्ट्स लॉ, ट्राई करो. वी नो बायोट सवर्ट्स लॉ, बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट वी कैन फाइंड एनीवेयर मैग्नेटिक फील्ड. सो इधर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, dB फाइंड करो इन दिस पॉइंट, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो. कितना साथ करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. So 0. 0, yes, so 0 is answer. So dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl sin, sin एंगल क्या होगा, देखो dl वेक्टर एंड r वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन है, dl वेक्टर r वेक्टर दोनों सेम, एंगल इज 0, so sin 0 by r square. So sin 0 is 0,
That's why magnetic field is 0. That means one sentence you have to always understand. Numericals is both important है. Magnetic field is 0 on the axis of the current element. करंट एलिमेंट का एक्सिस में आपको मैग्नेटिक फील्ड 0. आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको 0 0 बोलते सर क्यों 0 है, विच नॉट से. सो कभी भी करंट एलिमेंट का along the axis the magnetic field is 0. सो फॉर्मूला आ गया ना. अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस. ओके. सो कुछ भी नहीं, वो करंट कैरिंग कंडक्टर का स्मॉल करंट एलिमेंट देगा. मैग्नेटिक फील्ड इधर फाइंड करो, इधर फाइंड करो, इधर फाइंड करो बोलेगा. वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग बायोट सवर्ट्स लॉ. ओके. यू टेल मी वंस, इसका ये डायरेक्शन मालूम है आपको? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इफ दे टेल नॉर्थ ईस्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? दिस एंगल इज हाउ मच? नॉर्थ ईस्ट 45. 45 या था ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वगैरह. ओके चलो हाँ स्टार्ट करो. Wire placed along the north to south direction carries a current 8 amperes from south to north. Okay. So north, south, east, west. So it is carrying a current in south to north 8 amperes. So that means there is a current carrying wire. Current carrying wire is going from south to north. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a 200 centimeters northeast from the piece. Okay. So एक small wire is there. DL element का वजह से कितना मुझे 200 centimeter 200 meters का चाहिए. Small piece of wire is there. मतलब is a wire right? उसमें small DL element कितना है? That is DL is 1 centimeter. उस small current element की वजह से मुझे north east में 200 centimeters. 200 centimeters means how many meters? 2 meters में magnetic field चाहिए. dB. इस वायर का स्मॉल डीएल एलिमेंट का वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB चाहिए. एंड सिंस इट टू नॉर्थ ईस्ट, दिस इज थीटा इज द 45 डिग्रीज. द एंगल बिटवीन द डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में एंगल पड़े. So 1.41 into 10 power minus 9. 10 power minus 9. हाँ टेस्ला. That's it. Satvik, because of current element, what is formula? dB is equal to mu naught by 4 pi into IDL sin theta by r square. R is how much distance from the DL element? 2 meters. DL is length 1 centimeter. You have to convert it into meters. And into 10 power of minus 2. And mu naught by 4 pi is 10 power of minus 7. 10 power of minus 7 into I is nothing but 8 into DL is nothing but 1 centimeter means 10 power of minus 2 meters into sin 45 1 by root 2 by R square is nothing but 2 meters 4. So if you solve, you get answer as 1.41 into 10 power of minus 9 Tesla. Chalo. Yeah. So small DL element ko say use the formula. That's it. We know only one. Biots told that only small element ka only found, because at that time they don't know integration, differentiation, nothing. That's why they found only for small element. After getting the integration, they integrated to get the total current carrying wire ka okay. Correct. A wire placed along the east-west direction. Okay. North, south, east, west. So east-west direction में एक wire रखा. Carries a current 10 amperes from west to east. So 10 amperes is flowing from west to east. Determine the magnetic field due to 1.8 centimeter piece of wire. मतलब इसमें small DL element I took, which is 1.8 centimeters.
उसके वजह से 300 सेंटीमीटर्स में नॉर्थ ईस्ट में आई वांट द मैग्नेटिक फील्ड. नॉर्थ ईस्ट ही टोल्ड 45 डिग्रीज. आई वांट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट dv इज मच. ये कितना मीटर से? 3 मीटर से. Sir, 4.23 into 10 power minus 9. No, wrong. Mu naught by 4 pi into ideal sin by r square. So dl vector and r का बीच में 45 degrees, right? dl vector and r का बीच में. हाँ. And 1.8 centimeters को you convert into meters. So 1.41 into 10 power minus. Yes, correct. 1.4 into 10 power of minus 9 Tesla. And direction inwards or outwards. Always they'll give mention करेगा. Thumb indicate direction of current and check for the curled fingers. Outwards. Outwards, yes. Thumb indicate direction of current. Curled fingers indicate direction of magnetic field outwards. आया समझ? चलो श्रीराम आया ना? also. चलो तो डायग्राम अंडरस्टैंड करो, इजी हो जाएगा. So what it told, an element, okay, small element is placed at the origin and carries a large current this much. The magnetic field on the y-axis at a distance 0.5 meters. Okay, so this is a x-axis, y-axis. A small element is placed at the origin. Okay, a small dl element is placed at the origin. Kitna hai? That length is delta x. They given 1 centimeter. 1 centimeter I cap means nothing but I direction only. Current is also in I direction only. So dl ke direction only the current will be there. So 1 centimeter piece of wire, and in this current is flowing 10 amperes because it will I cap. The magnetic field on the y-axis at a distance 1.5. मतलब इधर से center से 0.5 meters दूर में I want to find the magnetic field at this point P. And dl vector and r vector का angle is 90. And direction also they given I cap, k cap, j cap minus k cap ऐसा. आंसर के साथ वो भी डायरेक्शन बोलने का. So 2 into 10 power minus 8 kPa. थोड़ा रॉन्ग है So भाई. 4 आर स्क्वायर है. हाँ 4 into 10 power minus आर स्क्वायर है ना. हम लोग डायरेक्शन बोलो इनवर्स आउटवर्ड्स. हाँ ठीक है. k cap. हाँ yours also got k cap only. देखो Outwards. थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट. ये आउटवर्ड्स है ना. आउटवर्ड्स बोलते क्या है? जेड एक्सिस है ना. जेड एक्सिस k cap. So answer is 4 into 10 to the power of minus 8 Tesla. समझ आया? Shriram, mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square. R is 1 by 2 whole square. And centimeters को into 10 power of minus 2 करने का. सॉल्व कर रहे हैं? ओके चल करो. डायग्राम ड्रॉ करो, इजी हो जाएगा. A small current element ideal with dl is 2 k cap. मतलब dl vector is in z axis and current is also in z axis. So ड्रॉ करो x axis, y axis and z axis.
Okay. Now dl, small dl vector is along the z axis. Okay. And current is also in z axis 2 amperes. And dl vector is 2 millimeters given. dl is 2 millimeters. Along z axis is coming towards you. I saw. Now he's asking find the small magnetic field at distance 3 meters. मतलब इधर से x axis में 3 meters दूर में I want to find the magnetic field at this point P. Now in this case में what is the angle between Sriram bolo what is the angle between dl vector and r vector? Angle is how much? This z axis is coming like this in front of you like this. X axis like this. So what is the angle between them? Don't know. 90. 90. No, use karo. Find dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square. Current is given dl is millimeters. 2 into 10 power minus 3 meters. Meters में convert करने का. So 6.6 10 power minus 2. No. Point first one 0.4 4 into 10 power minus 10 J cap. देखो 0.4 into 10 power minus 10 meters हाँ magnetic field test right? That's right. Okay देखो इधर one thing you understand this point very important. आपको there is a scientific notation बोल के है scientific notation. Scientific notation first year में units and dimension में little bit they will tell scientific notation में क्या है you have to always write in the format of a into 10 power of k where a should be greater than 1 less than 10 always. So either a into 10 power of 10 में a value is 0.4 whether it is greater than 1 no. So you have to always write in the format of greater than 1 less than 10. So कैसे लिखेगा बोलो a should be greater than 1 less than 10 you are telling 0.4 right 4 into 10 power minus 11. That is the answer exactly. Always you should write in the scientific notation. So ऐसे लिखने का options also will be there in that pattern only. Second one करो try करो. Second one is minus 6 means it is negative x axis में 6 है मतलब we should not put minus 6 only magnitude we should take right कितना So 1.1 into 10 power minus 11 minus J cap. Yes. perfect. now देखो a is greater than 1 आ रहा है ना very good. Now next one who will tell देखते हैं z is 3 meters मतलब इधर इस axis में 3 meters distance zone में I want to find magnetic field 0 because the current carrying wire is placed along the direction of along the axis. So whenever current is along the z axis same direction में the answer is magnetic field is 0. Okay, understood? Direction भी समझ में है ना? So this all Biot Savarts law only. Biot Savarts law. Now इसमें अभी after they got the integration differentiation के बाद they found that the complete wire का magnetic field they found small complete wire का magnetic field. Okay, so here what we are learning we are learning 3 different shapes. We are learning 3 different shapes. कौन से है
पर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वी आर लर्निंग, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पूरा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसके बाद वी विल लर्न सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड वी आर लर्निंग कंप्लीट डिटेल्स में। देन विल गो फॉर ए सॉलिनॉइड करंट कैरिंग वायर से। इफ दिस 3 टॉपिक्स डन, आपको मैग्नेटिज्म डन, वी हैव टू गो फॉर द मूविंग चार्जेस ओनली। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के बारे में लर्न करने वाला, राइट? चलो, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अभी तक मतलब बायोट सोर्स का यूज करके ओनली इंटीग्रेशन करने के बाद ओनली विल गेट। ओके, तो इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन कहानी थोड़ा देखेंगे क्या 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 करने के बोल के। Okay, now magnetic field due to a straight current carrying wire. So what he is saying is, suppose मान लो there is a finite current carrying wire, finite current carrying wire, इधर से ये डिस्टेंस दूर में, ये डिस्टेंस दूर में, ये देखो, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई एम टेकिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई एम नॉट टेकिंग एट द मिडिल, मिडिल विल बी यू नो सेपरेट स्पेशल केस हो जाएगा। सो मैं समवेयर बिलो और एबो ले रहा हूं। ओके, आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। ओके, सो क्या करने वाला है, इधर से एक ज्वाइन करूंगा टॉप पॉइंट एंड बॉटम को आई एम ज्वाइनिंग। ओके, टॉप एंड बॉटम आई एम ज्वाइनिंग। ओके, I will call from this perpendicular distance say I call this as phi 1, and same perpendicular distance to the starting of a connector which is joined phi 2. One thing you have to understand, the phi 1 should be like phi 1 phi 2 should be in opposite direction. That is important. ये करके एक्चुअली डेरिवेशन नहीं कर रहे, ये आपको थोड़ा स्मॉल एलिमेंट लेके बायोट सर्किट लगा के विल इंटीग्रेट फ्रॉम -phi1 टू phi2 किया तो यू विल गेट द आंसर, राइट? सो दैट्स व्हाई इन क्वेश्चंस में ऑलवेज बोथ एंगल शुड बी टेकन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कंपल्सरी, देन ओनली द फार्मूला विल मैच। ओके, सो एट दैट टाइम में हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद विल गेट ए मैग्नेटिक फील्ड। लिखो फॉर्मूला, μ0/4π into I by A into sin phi 1 plus sin phi 2, sin phi 1 plus sin phi 2. This is the formula for finite wire, finite current carrying wire के वजह से magnetic field A distance दूर में, and A is always a perpendicular distance. Okay, so formula is μ0/4π into I by A into sin phi 1 plus sin phi 2. सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन वगैरह नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट नहीं करने का भी, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जस्ट मतलब हम लोग क्या किया, स्मॉल एलिमेंट लेके वी फाउंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायोट सर्किट लॉ, एंड देन वी इंटीग्रेट टू गेट फ्रॉम वेयर टू वेयर -phi1 टू phi2 इंटीग्रेट किया तो विल गेट दिस आंसर, μ0/4π I by A into sin phi 1 plus sin phi 2. एंड आपको 37 डिग्रीज 53 डिग्रीज वाला मालूम है ट्राइंगल, फर्स्ट ईयर में याद है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स 90 डिग्रीज है ना, 3 4 5 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, राइट? 5 तो कॉमन है, 5 तो कॉमन है, राइट? दिस इज 37, दिस इज 53। टेल मी इसका साइड क्या होगा, इधर क्या होगा, विच साइड? 3, बिकॉज दोनों में से स्मॉलर एंगल स्मॉलर साइड A4, ये बिगर एंगल बिगर साइड 4 A3। ये ट्राइंगल आपको लर्न करना पड़ेगा। देन टेल मी व्हाट इज sin 37 वैल्यू, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। व्हाट इज cos 37 वैल्यू 4/5। ऐसा ये भी लर्न करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बीच में दे देगा डायरेक्टली। इफ यू नो ओनली दिस 90 45 में प्रॉब्लम, ये वाला भी लर्न करना। 37 53 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट इज फॉर्मूला आ गया, सनी बोलो, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर? μ0/4π I by A into sin phi 1 plus sin phi 2. हाँ, स्कूल्स में वगैरह मैंने तो टेक्स्ट बुक्स में R बोल के डालेगा, वो सब नहीं है, एक एज, बिकॉज आपको आगे में
रेडियस भी आएगा, ए भी आएगा, दैट आर बोलने से क्या डाउट आएगा वैसे, इसलिए ए ले रहा है, इज गुड थिंग। ओके, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। स्कूल में क्या लिया आपका? So they took the other angles like नहीं, pi इधर to 90. फॉर्मूला में इधर क्या लिया? ए। हाँ। ए। ओके, चलो ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। करो। Now current is flowing 10 amperes in the wire. A is 70 centimeters. This A is 70 centimeters. इस डिस्टेंस में देखो 137 एंटी क्लॉकवाइज दिया, एक क्लॉकवाइज दिया। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। The given 37 53 degrees. Find the magnetic field at that point P. This is a finite wire. Use the formula, substitute and tell the answer. So 2 into 10 power minus 6 Tesla. 2 into 10 power minus 6 Tesla, yes. Direction inverse or outwards? Inverse. Inverse. Minus by 4 pi into I by A into sine phi 1 plus sine phi 2. देखो सीधा म्यू नॉट बाय 4 पाई वैल्यू इज 10 पावर माइनस 7। आई यू नो ए सेंटीमीटर्स टू मीटर्स कन्वर्ट करने का, एंड करो नीटली करो। 10 पावर ऑफ माइनस 7 इंटू 10 बाई 70 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 2 इंटू साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। साइन 37 इज 3 by 5 प्लस साइन 53 इज 4 by 5, राइट? नो, सॉल्व कर लो। सादिक, how much you got? श्याम बोलो कितना? हाँ I कितना got है? Yes, same answer you got. So answer is 2 into 10 to power of minus 6 Tesla. ये लगाना आ गया तो देन ये कैलकुलेशन पार्ट तो कुछ नहीं है, आपको ये सब्स्टिट्यूट करना आने का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, राइट? चलो, नाउ आई विल गिव जेईई मेंस क्वेश्चन। करो। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट सेगमेंट AB. सो AB इज अ फाइनाइट वायर, उसमें करंट 5 एम्पीयर जा रहा है, उसका लेंथ इज 6 सेंटीमीटर्स। इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इस पॉइंट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। I'll give options. JEE main question, try. So this is a line segment. You have to know what, you have to know the perpendicular distance. And phi 1 phi 2 कैसा आएगा पॉइंट P में? A phi 1 है, A phi 2, right? See, phi 1 phi 2 anything you can interchange, but आपको because sin phi 1 plus sin phi 2 is there, दोनों प्लस only, so no problem, both are sin only, so phi 1 phi 2 कुछ भी ले सकते हैं, but दोनों different directions में रहने का, that we are calculating always from perpendicular distance. This is one direction, this is one direction. So 1.5 and 10 power minus 4. क्या किया, किधर से किया, क्या किया बोलो, कॉपी कर रहेगा? No, sorry. What done 5 1 5 2, how much you got? So 5 and 5 to 37 degrees. 37 degrees. By 37 degrees, tell me. So because the A is 4, Why is for this is how much? this is 3 centimeters and 3 Okay. centimeters. This 4 centimeters. Okay. This that's why 3 का opposite 37 37. Okay. And okay, चलो देखें।
So 1.5 into 10 times. Yes, correct. 1.5 into 10 power minus 5 Tesla. Same formula. Shyam. Divided by 4 pi into I by A into sin phi 1 plus sin phi 2. I, that is 5 ampere, and A, 4, and everything, calculate. Phi 1, phi 2 also, right? Good. Chal. Now, one more point you have to understand now. Dekho. If P lies outside the line of wire, if if lies outside the line of wire, suppose मान लो there is a finite wire current I. The point P is here. I want to find the magnetic field because of this one. Definitely there is a magnetic field surrounding me everywhere. Okay, so इधर कितना? That is outside the wire, right? Outside point. Then कैसे find करेंगे? So क्या करने वाला है? इधर से I'll extend like this because we have to take always perpendicular distance. So this is the perpendicular distance. A तो मिल जाएगा. Because आपको magnetic field करने के लिए mu naught by 4 point I by A into sin phi 1 plus sin phi 2 चाहिए. Okay. So पहले क्या करेंगे? Outside wire तो क्या करने वाला है? We will extend backwards and the perpendicular distance we are taking A. First one आ गया. And इसमें भी sometimes कैसे देगा? देखो starting point, ending point, right? Starting point I am joining from that point P, and ending point I am joining from this point P. Okay. Sometimes how they will give? They will give like this. From perpendicular distance से phi 1 and perpendicular distance से phi 2. Then how to find magnetic field? Tell me. The formula क्या है इसका? How to find magnetic field because of finite wire? Mu naught by 4 pi into I by A into sin phi 1 plus sin phi 2. Right or wrong? This formula same only or wrong? क्या wrong है? Tell me. So far. दोनों सेम डायरेक्शन है. सो डेरिवेशन में आपको वन शुड बी ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके. सो हम लोग क्या करने वाले हैं? द स्मॉलर एंगल जो भी है इसका क्या करने वाला है? इधर एक्चुअली दिस इज वन एंगल, दिस इज वन एंगल, राइट? सो मैं क्या कहूंगा एक्चुअली इधर से लेने का, दिस एंगल फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इधर तक लेना. बिकॉज वी हैव टू मेजर वन इज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज भी आ रहा है ना क्लॉकवाइज मेजर करने का. Okay, that angle is how much? Total is 360, right? 360 minus 5:1. That angle. Okay, so I told you, दोनों angle should be opposite direction में. One is anti-clockwise, other should be clockwise. Clockwise के लिए आपको ये anti-clockwise है ना, always perpendicular distance से measure करेंगे. देखो perpendicular distance start किया and ending at this point. Okay, now substitute in the formula में. B is equal to mu naught by 4 pi into I by A into sin phi 1 के जगह में 360 minus phi 1 plus sin phi 2. What is 360 minus phi 1 is? Minus sin phi 1. Minus sin A, because 360 and 0 is same. So sin of minus theta minus sin theta. So therefore sin phi 2 minus sin phi 1. So directly you can use this formula whenever the P lies outside the point. Sin phi 2 is the bigger angle minus smaller angle. Whenever they given in the same direction, directly you no need of again 360 minus theta वो सब नहीं है. आपको क्या करने का? बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल करने का फॉर्मूला. sin phi 2 minus sin phi 1. Okay, finished. Okay, एक प्रॉब्लम करो, हो जाएगा. देखो here there is a 3 wires are there. First wire, second wire, and third wire. 3 wires are there. Because of this wire, I want to find magnetic field at this point.
and दोनों same direction में they given this one. Okay, you tell me इस wire के वजह से magnetic field is how much at this point? A small element की वजह से magnetic field is how much? It is along the axis. The magnetic field is 0, right? And इसके वजह से इस part की वजह से it is along the axis, that point में इसके वजह से magnetic field, there is no magnetic field. So only is current carrying wire. No, substitute करो formula में. No, find magnetic field at this point. P lies outside and angles are in the opposite direction में, same direction में is there. So mu naught by 4 pi into I by into sin phi 2 minus phi 1. That's it. Again, no need of doing 360 minus वगैरह नहीं करने का. That use करो formula. Phi 2 is 60, phi 1 is 30. Yeah, 10 power minus 7 into I by A into root 3 minus 1 by. So generally, whenever they not given the current, mu naught by 4 pi रहने दो. Again, no need of converting 10 power minus 7. Mu naught by 4 pi ऐसे रहने देगा. Whenever they given values, everything, then only try to do. कितना है श्रीराम? Mu naught by 4 pi into I by A into sin phi 2 minus phi 1. Phi 2 is 60, बड़ा minus smaller. So sin 60 is root 3 by 2, 1 by 2. So root 3 minus 1 by, so mu naught by 4 pi into I by A into root 3 minus 1 by 2. This is a magnetic field at a point P. Okay. Next, some more questions करने वाले हैं वो next class में, like multiple conductors वगैरह पूरा करने वाला है.